हेलो धर्मा स्वास्थ्य जी, हेलो संगीत जी, राम राम। राम राम, कैसे हैं आप सब? हेलो बंस, हेलो, थैंक यू सो मच लाइक के लिए। विनोद शर्मा जी, आप हैं या चले गए? मैसेज कीजिए, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? कैसे हैं आप सब? हम हैं। आप कहाँ से हैं? धर्म स्वास्थ्य, कैसे हैं आप? मैसेज कीजिए, कहाँ से हैं? बस आपकी दुआ है, दुआ है, सब ठीक है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए दुआ बनी रहेगी। और बताइए, आपका चैनल कैसा चल रहा है? मैं अभी जस्ट आपके घर से आई हूँ।
मैसेज कीजिए। जी आपकी दुआ से अच्छा चल रहा है। अच्छा सब कुछ में आप कह रहे हो। आप कहाँ से हो वैसे? आप कहाँ से हो? आपके 1K हो गए हैं? जय श्री राम। हेलो अजय सर जी, कैसे हैं आप मेरे एलबी में रोज आते हो, अच्छा लगा आप आते हो। आप कहाँ से हो? मैं आपकी दुआ से रांची से हूँ। अच्छा, रांची से हो? मैं बिहार से हूँ। शिमवॉल जी हेलो, राम राम, कैसे हैं आप? भी नए हैं शिमवाल जी के घर आप लोग चले जाइए। आपका 1K हो चुका है धर्मा जी। अच्छा शिमवाल जी, आपका नाम क्या है? और अजय सर आप चले गए हैं क्या? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आपकी दुआ से बिहार में मेरा ससुराल है। ओ अच्छा, बिहार में ससुराल है। अच्छा धर्म, आपका नाम क्या हुआ? धर्म स्वास्थ्य से आप नाम अकाउंट बना रखे हो। नाम क्या है आपका? आदित्य। अच्छा, थैंक यू सो मच नाम बताने के लिए। भक्ति जी कम वेलकम। होस्ट जी कहाँ गए? मैं यही हूँ। आप और बताइए, आपके दुआ से मेरा नाम मुकेश है। अच्छा, मुकेश आपका नाम है। थैंक यू सो मच आप लोगों को अपना नाम बताने के लिए। मैं आ गई। तो जो भी नए हैं शिमवॉल जी के घर चले जाइए। अच्छा, आदित्य जी के घर चले जाइए। आपके कितने फ्रेंड हो चुके हैं? 1K हुए हैं आपके? शिमवाल जी, धर्मशास जी आपके, मुकेश जी आपके 1K हो चुके हैं? अजय सर आप चले गए हैं क्या?
हैं। थैंक यू सो मच सर आपको रुकने के लिए। हाँ जी, आपकी दुआ से मेरे हो गए हैं। अच्छा, WT भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और आप मुजफ्फरपुर साइड से हो ना अजय सर? आप वहाँ का मौसम कैसा है अभी? इधर तो काफ़ी बारिश हो रही है कल से ही, अभी भी लग रहा है बारिश होगी फिर। ब्लॉगर शांडिल्या न्यू कम। ब्लॉगर शांडिल्या के लिए जो भी कोई नए होंगे तो चले जाना, आपके दुआ से सब कंप्लीट है। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप तो टेंशन फ्री हो चुके हो। आपके बगल में ही मेरा घर है, कोलहिया के बगल में। मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, वहाँ ताला बंद रहता है, छठ में बस जाती हूँ 2 दिन के लिए। अभी तो उधर आम काफ़ी फल रहा है। पेड़ में पक रहा है अभी। और ब्लॉगर शांडिल्या के लिए जो भी नए हैं आप लोग चले जाइए, रिटर्न मिल जाएगा, मेरा ही है वो भी, ठीक है। कि दुआ से मेरे हो गए, लेकिन घर तो वही है। हाँ हाँ, घर मेरा वही है, घर वही है। मेरा दुआ से आप कहाँ से हो जी? अच्छा, मैं बिहार से ही हूँ, मैं सीतामढ़ी में रहती हूँ अभी। सीतामढ़ी का नाम तो सुने होंगे ना, वहीं रहती हूँ। अजय सर, आपका वीडियो सब काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत जानकारी वाली बातें आप बताते हो। मतलब बहुत ऐसा कन्फ्यूज़न था जो आपका वीडियो देख करके, मतलब नॉलेज कुछ कुछ हुआ कि चलो अच्छा ऐसा होता है। शिमवाल जी आप चले गए, मैसेज कीजिए कोई है तो। धर्म क्या नाम है आपका? अभी तो मैं नाम ही भूल जाती। मुकेश जी, मुकेश जी आप मेरे फ्रेंड हो, आपके दुआ से। इंदू आइडल ब्लॉग सीतामढ़ी से मेरे फ्रेंड हैं। इंदू आइडल ब्लॉग सीतामढ़ी से हैं मेरे फ्रेंड। अच्छा, क्या ये यूट्यूब चैनल का नाम है उनका, इंदू आइडल ब्लॉग? आपके फ्रेंड तो हर एक जगह फैले हुए हैं। आप रांची के हो, ससुराल बिहार में है, फ्रेंड सीतामढ़ी के हैं। जी हाँ, आपके दुआ से सब मेहरबानी है। अच्छा, तो चलिए, दुआ बनी रहेगी आप पे। और आप मेरे ओल्ड हो। मैं तो अभी आपके घर गई थी। अजय सर आप चले गए क्या? और बताइए आप लोग का।
लोगों का लंच हो गया? मेहरबानी बनी रहेगी। जी नहीं, आपकी दुआ से मैं न्यू हूँ जी। हाँ, मुझे लगा कि आप न्यू हो। वही तो मैं अभी मतलब नेल सब पूरा है कि नहीं, डब्ल्यूटी कितना है? सब तो मेरे पूरे हो चुके हैं, पूरे मेरे अक्टूबर में ही हो गए थे। पर डब्ल्यूटी मेरा बहुत कम है अभी तक, बस 300 समथिंग बस हुआ है। डब्ल्यूटी बहुत कम है मेरे, बहुत सारे कट भी गए, जो कि मैं वीडियो तो 500 अप्रॉक्स देख रहे होगे मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन इतना अच्छा व्यू ही नहीं आया कभी वीडियो पे। तो चलिए, अच्छी बात है, आप नए हो, आए, अच्छा लगा। तो आप मेरे से जुड़ जाना, ठीक है? कीप मैसिंग होस्ट की दुआ से। और होस्ट की दुआ, संगीत जी की दुआ। चलिए, हुआ बहुत हुआ, दुआ इतना दुआ नहीं करते हैं हम किसी पे। तब से आप दुआ दुआ लगा रखे हो। ये क्या है, ब्लॉगर सैंडिलियम? हाय मुकेश जी। धर्मा जी जाइए, आपको बुलाया जा रहा है। मेरी आवाज़ आपको गई क्या अजय सर? संगीत जी की दुआ। खाना हुआ होस्ट जी, भगवान की दुआ से। अच्छा, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? मेरी तो हो गई, आप अपना बताओ, आपका हुआ या नहीं? आप करते क्या हो मुकेश जी? आप करते क्या हो? मैसेज करो सब होस्ट की दुआ से। मैसेज तो आपको कर रहे हैं, आप किन्हीं को रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, सब आपको अपने घर बुला रहे हैं और आपको वैल्यू ही नहीं दे रहे हो। लाइक कर दो दोस्तों। हाँ, जो भी हो लाइक ज़रूर कर देना। कीप मैसेज गाइस, जो भी है मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपको आने के लिए और इतना समय भी देने के लिए, अच्छा लगा। अजय सर आप चले गए क्या? जो भी हैं आप लोग मैसेज कीजिए। और मुकेश जी आप जुड़ जाइएगा, ठीक है? और आप क्या करते हो? आप नो नो थैंक्स, आपकी दुआ है। अच्छा। ठीक है, ठीक है।
थैंक्स, वापस ले लेती हूँ। और वहाँ का मौसम कैसा है अभी? वहाँ भी बारिश हो रही है क्या? मैं टीचर हूँ आपकी दुआ से। अच्छा टीचर हो तब तो नहीं, गर्मी है आपकी दुआ से। तो ठीक है, इधर से फिर बारिश जाएगी उधर ही, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में उधर भी बारिश होगी तब। आप टीचर हो तो अच्छा, तब तो अभी लॉकडाउन में पूरा ऑफ चल रहा होगा, पूरे दिन घर में। ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं हो रही होगी ना आपकी? हाँ होती है आपकी दुआ से ऑनलाइन। अच्छा क्लास ऑनलाइन लेनी पड़ती है? कौन से क्लास को आप पढ़ाते हो? सेवन टू टेन। अच्छा तो ये सब क्लासेस की ऑनलाइन क्लास हो रही है, तब तो सही है। नहीं तो पूरे दिन घर में काटना, ये तो बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। और स्कूल वगैरह कब से खुल रही है, कुछ नोटिस आया है आप लोगों को? मैसेज कीजिए 7 to 10। कुछ नहीं, कभी आइए रांची घूमने ऊपर वाले की दुआ से। रांची के तो मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, लेकिन मैं उधर गई नहीं कभी। रांची के मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, बट मैं उधर नहीं गई हूँ कभी। अभी तक कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी उधर आने की। नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ।
हाल तो अभी सब बंद है, तो हम लोगों को तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेना है, तो बस पूरे दिन घर में रहना होता है। मिथिला की संस्कृति का वीडियो बनाइए। अच्छा, उस पे व्यूज़ आएंगे? मिथिला की संस्कृति कोई देखेगा वो वीडियो? यही समझ में नहीं आता कंटेंट क्या उठाया जाए जिस पे लोग ज़्यादा देखेंगे। ब्लॉग्स तो मतलब बिहार में उतना नहीं हो पाएगा। कुछ वैसा जगह भी नहीं है, और ब्लॉग्स तो वैसे भी छोटे लोगों का, नॉर्मल आम आदमी का ब्लॉग्स कौन देखता है जब तक कि वो बहुत फेमस ना हो जाए। उस सब पे तो और भी व्यूज़ नहीं आएंगे। वो भी सही बात है, ये तो है ही। मतलब हम लोग का कौन देखेगा जब तक हम लोग फेमस ना हो जाए। बहुत है ब्लॉग्स बनाने वाले। आपके वीडियो पे व्यूज़ अच्छा आ जाता है? मैं तो आज आपके घर गई थी पर इतना नोटिस नहीं की। अच्छा, व्यूज़ नहीं आता है। आपका अपने आप मोनो हुआ था या आप भी एलवी किए थे? मैं तो वीडियो डालते मतलब 500 अप्रॉक्स वीडियो डाली, 1 साल हो गया बस इसी इंतज़ार में कि इतना डाल लूँगी उसके बाद शायद व्यूज़ अच्छा आने लगे, अच्छा लगे। लेकिन साल लग गए और व्यूज़ तो जैसा का तैसा ही रह गया। और इतना मेहनत कर चुकी थी सब्सक्राइबर के वजह से, तो इस वजह से मैं मतलब ऐसे ही इसको छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा, तो सोच रहे कैसे भी मोनो हो जाए। हेलो, आप चले गए क्या? हेलो। और वहाँ पे कोविड का क्या हाल है आपके घर के अगल बगल? कंडीशन अच्छा हो गया कोविड का?
प्रणाम प्रणाम। हम हैं कैसे जाएंगे। थैंक यू सो मच रुकने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए, और जितना हो सके आप मेरी हेल्प कर देना। की वॉचिंग है, मैसेज कीजिए आप लोग। थैंक्स, हमने ऊपर वाले को बोलिए। अच्छा लगता है, भगवान पे बहुत भरोसा करते हो, है ना। बस वही एक सहारा है। हाँ वो तो है ही, वही एक सहारा है। ऊपर से 2 साल से इतना ख़राब सिचुएशन आ चुका है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। हर एक चीज़ खत्म, मतलब बहुत का तो फैमिली ख़त्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं। जो जिंदा भी हैं वो भी इतने टेंशन प्रेशर में हैं, पता नहीं कब अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे। सब ठीक होगा। हाँ देखिए, भगवान करे सब ठीक हो। मोदी है तो अच्छे दिन हैं। देखिए, ये तो कोरोना आकर के सबको परेशान करके रखा है। मोदी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो कितना कुछ कर लिए होते अभी तक। वो सब कुछ खत्म होते जा रहा है। ये आपके एग्ज़ाम, ये आपका एग्ज़ाम है, आप पास करते हो कि फेल ऊपर वाले का एग्ज़ाम है। हाँ एक तरह से वही मान लेते हैं कि वही है। एग्ज़ाम ऐसा है कि जीवन और मृत्यु के बीच में एग्ज़ाम है। इतने लोग मर गए, वो फेल कर गए। फिलहाल अभी तक हम सब बचे हैं। भी तीसरा लहर आना बाकी है, उसमें फिर कितने लोग जाएंगे। वैसे इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है।
पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा। हाँ वो तो है ही। नेगेटिव सोचने से भी कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन के अलावा। फालतू का टेंशन हो जाता है लोगों को, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। आपसे राम राम जपिए। हाँ राम राम तो जपते ही रहते हैं। मतलब क्या बताए कि यूट्यूब का काम स्टार्ट किया, उसमें भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पिछले लॉकडाउन में स्टार्ट की थी जब मन नहीं लग रहा था, पिछले लॉकडाउन से ये लॉकडाउन 1 साल हो गए और ये वही का वही रह गया। अब तो उब चुके हैं हम इससे। कुछ भी करने जाते हैं तो अच्छा होता ही नहीं है, तो इसलिए कभी कभी उदास हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं जान के नहीं। यूट्यूब भी हो जाएगा, सबका टाइम होता है। होप शो हो जाए। अब तो मतलब 1 ईयर हो जाने के बाद तो थोड़ा बहुत WT कटना स्टार्ट हो जाता है ना, तो इधर मैं LV करती हूँ, उधर से वो WT कटता भी रहता है। यूट्यूब हो जाएगा। चलो सही है, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत ही मोटिवेटेड टाइप लोग हो, अच्छा लगा। जल्दी से कुछ मिल जाए तो मेहनत का फल मीठा कैसे लगेगा। वाह, ये तो बहुत ही मस्त बात आप कह दिए। फिर से आज मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। ये बात तो है ही कि जल्दी मिल जाएगा तो मेहनत का फल मीठा नहीं लगेगा। एक आम भी खाने के लिए काफ़ी साल मेहनत लगा दे, पेड़ को बस देखना होता है, उसके पत्ते को झाड़ू मारना पड़ता है। बहुत सालों बाद आम खाने को मिलता है लोगों को। बी पॉजिटिव संगीत जी, खुश रहो, हंसते रहो, फिर देखो आपका लक। हाँ ठीक है। थैंक यू। वैसे मैं ज़्यादातर पहले हंसते रहती थी, लेकिन अब उतना नहीं हंसती, बहुत टेंशन में रहती हूँ।
हेलो, चलिए हंसिए हंसिए, ऊपर वाले की दुआ बरसने वाली है आप पर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सुन के भी अच्छा लगा। दुआ बरसने लगे, अगर बरसने लगी तब तो आपको भी काफ़ी दुआ मैं बरसाऊंगी। आपने हर एक बात में मुझे कहा है कि आपकी दुआ से और ऊपर वाले की दुआ से कुछ अच्छा हो जाए, कि हंसे ना, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। आप किस चीज़ के टीचर हो? अच्छा, ये मुस्कान चाहिए आपके ऊपर। अच्छा, आपको बहुत पता है। ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है तो हंसते रहिए। हाँ हाँ, ये बात तो है ही कि हंसते रहिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत ही मोटिवेटेड हो और आप वीडियो भी ऐसा ही कुछ डालते हो यूट्यूब पे, है ना? अरे मैं देखी 800 समथिंग वीडियोस हैं आपके चैनल पे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे कि मोनो का जब टाइम आता है और क्या वो अकाउंट डिटेल्स बाय, आप सुन लो एक बार मेरी बात। वो अकाउंट डिटेल्स जो कुछ भी भेजते हैं उस टाइम में जो एलवी लाइव किया हुआ जो भी वीडियो होता है वो सब रहता ही है, या वो सब को डिलीट करके भेजा जाता है? कुछ पता है आपको इस बारे में? आप चले गए, वो सब रहता है। अच्छा, वो सब रहता है। और मोनो होने के बाद मोनो होने के बाद भी ये सब को रहने ही देंगे या हटा देंगे? अच्छा, वीडियोस जो मान लीजिए कोई हम अपलोड किए हैं उस पे थोड़े बहुत व्यूज़ हैं और जो भी आधा घंटा 1 घंटा वॉच टाइम है, अगर मैं वो वीडियो हटा दी तो वॉच टाइम भी, जो भी 1 घंटा मिला है उस वीडियो का, वो भी माइनस हो जाता होगा। डब्ल्यू कम हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि मैं उसको हटाऊंगी तो डब्ल्यू कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए और आपको आने के लिए भी। अब आप जा सकते हो। हाँ ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। और आप आए, अच्छा लगा, आते रहना।
बात करके अच्छा लगा। राम राम आपकी दुआ से। राम राम।
हेलो भजन गीत जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हैं आप? चली गई?